अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल शीन रिएक्शंस। दिस इज़ मी शीन चौधरी और मेरे साथ अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मी चौधरी आसिफ अली। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वी होप सो कि आप सब लोग फिट फाट होंगे, टिप टॉप होंगे और मज़े में होंगे। हमें कमेंट सेक्शन में बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी, तो बहुत सारे लोग कह रहे होते हैं कि आप हमारी वीडियो पर रिएक्शन नहीं देते, सारों की वीडियोज़ पर रिएक्शन देंगे। तो आज हम जो वीडियो लेके आए हैं, वीडियो का टाइटल है बांग्लादेश प्लान टू बिकम एन इकनॉमिक पावर हाउस। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लग रही है नाम से ही। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हल्का सा प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप सबसे पहले वीडियो देखें। Let's start the video. 3, 2, 1, start. Bangladesh has emerged as one of the fastest growing economies around the world, Yes. continuously clocking in GDP growth rates of around 6 to 7% annually. This has happened because of the outstanding initiatives from the government and the persistence of the people. And this has led to the idea that Bangladesh would become Asia's next rising tiger, a definition which applies to some Asian nations that have seen tremendous economic growth due to rapid industrialization. With Bangladesh, it is becoming crucial for this to happen, and the government has laid out the country's biggest plan ever, the so-called Vision 2041, a long-term national strategic socio-economic plan that would enable the People's Republic of Bangladesh to become a high-income nation. So what is this Vision 2041, and how is it going to position Bangladesh as the world's next economic destination? Before we move on, don't forget to leave us a like and subscribe for more. The Bangladesh Vision 2041 was crafted as a 20-year plan that started just in 2021. It was a master plan that aims to increase the national gross domestic product of Bangladesh close to 2.6 trillion US dollars, way above from its 2021 estimate at just $409 billion. In order to do this, the government has laid out several frameworks to transform its various industries. From agriculture, one that which Bangladesh has continuously improved upon and is solving hunger, its education and healthcare, ensuring that its human capital is well educated and healthy. Ensuring that its human capital is well educated and healthy is key to ensure that its economy grows exponentially. Transportation and communication are two strategic components that are also aligned with its recent massive infrastructure developments. And lastly, to overall ensure that its businesses are met with vigorous growth. These frameworks are what will propel the economy of Bangladesh to become a developed country by 2041, and these will not only ensure that the nation to have a $2.6 trillion of GDP, but also to improve its nominal GDP per capita to $16,000 in 2041 from $2,554 in 2021. Which will help improve the overall wealth of everyday individuals living in Bangladesh and a way that will eradicate poverty. To enable such a way for individuals to enrich themselves, the development of human capital has been one of the largest emphasis of the 20-year master plan. It is critical not just for themselves, but for the overall plan. A healthy and skilled human capital has always been a way to improve a nation's economy, and this strategy is evident across all the other Asian tigers. For Bangladesh, the major points that they will improve is to have a knowledge-based economy, ensuring that the population literacy rate is at 100%, universal free education for up to 12 years, and the implementation of affordable healthcare. These are the most significant necessary steps to enable the society of Bangladesh to have that healthy and skilled human capital. This Vision 2041 also has two more important key aspects. To increase the foreign direct investments that Bangladesh receives and increase the investment to GDP of the economy. To drive this sector, Bangladesh's key milestones have already been formed. This is being fueled by the robust growth of its IT sector in recent years, which has paved the way for economic zones to be born. These economic zones are important to ensure that investments from foreign nations and local investors are taken for economic growth. According to the Bangladesh Economic Zone Authority, they have received 153 proposals in 2021 for one of its zones called the Bangabandhu Sheikh Mujib Shilpa Nagar. These 100-plus proposals are estimated to be worth over $20 billion, which suggests that a growing rise in foreign investments popularity led by the attractiveness of Bangladesh's economy. The last two key aspects are to increase the country's exports from $38.7 billion in 2021 to over $300 billion in 2041, and to increase the infrastructure investments to $1.1 trillion in 2041.
These will likely be fueled by its position in the textile industry, but also its growing technology hub, which is connected to the economic zones. But there are also plans laid out to ensure that its exports are diversified, meaning textiles and IT will not be the only major components that will grow. There is further emphasis to ensure that every single industry is going to ride this 20-year miracle. These are the major achievements that Bangladesh's government and people want to achieve. Getting there is hard, but with the right approach and continuous investments in its humans, infrastructure, and further pushing its export-oriented industries, we believe that the nation is capable of doing so. तो फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी। वीडियो मैंने बताया कि बांग्लादेश का नेक्स्ट 20 इयर्स का जो प्लान था 2021 से 2041 तक, और इसमें उन्होंने जो उनका बेसिक जो है प्लान है कि जीडीपी को जो है वो ग्रोथ देनी है। तो जीडीपी को बढ़ाने के लिए उन्होंने हेल्थ सेक्टर में, उसके अलावा एजुकेशन सेक्टर में, ह्यूमन डेवलपमेंट और टेलीकम्युनिकेशन, इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें थी। जो बहुत ज़बरदस्त बात है कि 2041 तक जो है उनका प्लान है कि उनकी जो है $2.6 ट्रिलियन हो जाएगी जीडीपी, जो अभी इंडिया की है, और आगे जाके ये बांग्लादेश की हो जाएगी। ये तो फ्रेंड बहुत ज़बरदस्त वीडियो लगी है। नेक्स्ट जो एशियन टाइगर है, ना वो इंडिया है, ना वो पाकिस्तान है, ना वो कोई और कंट्री है, बल्कि वो बांग्लादेश है, जो पाकिस्तान और इंडिया के बाद आज़ाद हुआ था और पिछले 30 से 35 सालों में वो उठा ऊपर आया। और आज उनके जो प्लान्स हैं 20 साल में कि उनका जो जीडीपी पर कैपिटा है वो अभी $2200 है, लेकिन उसको वो $16,000 तक लेके जाएंगे। बहुत बड़ा नंबर है। तो देखते हैं कि बांग्लादेश इसको अचीव कर पाता है कि नहीं, लेकिन लग तो यही रहा है कि बांग्लादेश इसको अचीव कर लेगा, जिस तेज़ी से बांग्लादेश ग्रो कर रहा है। इकॉनमी बांग्लादेश की जो है $400 बिलियन के राउंड अबाउट है, और इकॉनमी को वो 2.6 ट्रिलियन तक लेके जाएंगे। तो ये सारे नंबर्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट पे बांग्लादेश काम कर रहा है, हेल्थ सेक्टर पे, एजुकेशन सेक्टर पे, क्योंकि जब इंसान जो हैं वो अच्छे सेहतमंद होंगे, जैसा कि वीडियो में उन्होंने बताया, तो तभी सारी इंडस्ट्री आगे जाएगी। और एक्सपोर्ट्स में वो बता रहे थे कि टेक्सटाइल सेक्टर ज़्यादा है और IT, उसको अब साथ में दूसरी चीज़ें भी ला रहे हैं, डिवर्सिफाई कर रहे हैं ताकि और भी एक्सपोर्ट्स की चीज़ें हों। और $39 बिलियन बांग्लादेश की एक्सपोर्ट है, उसको वो $300 बिलियन तक लेके जाएंगे। तो बहुत अमेजिंग चीज़ है। जब 2041 में ये सारी चीज़ें बांग्लादेश अचीव कर लेगा तो नो डाउट बांग्लादेश जो होगा वो एशियन टाइगर बन चुका होगा। बल्कि अभी भी बांग्लादेश एशियन टाइगर ही जिस तेज़ी से वो ग्रो कर रहा है, हम तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए हैं। जितनी भी हम वीडियोस देख चुके हैं पहले, इससे बांग्लादेश की जो है वो इंडस्ट्री मेन जो है वो फोकस कर रही है टेक्सटाइल पे। तो अब वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को साथ लेके चलते हुए इसको डाइवर्सिफाई, अभी तक सिर्फ जो एक्सपोर्ट हो रही थी वो टेक्सटाइल की हो रही थी, तो अब बीच में और डिफरेंट चीज़ें ऐड करेंगे जो इनकी जीडीपी को और ज़्यादा मज़ीद बढ़ाएगा। आप लोग ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। हमें तो वीडियो बहुत मज़े की लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हल्का सा प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप सबसे पहले वीडियो देखें। नीचे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताया करें कि वीडियो कैसी लगी, अपनी वीडियो रिकमेंडेशन भी दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी, स्टे ऑसम। अल्लाह हाफ़िज़।